Hello students, now today in this session we will discuss about matter, element, compound, atom and molecule. First of all, we will start from matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. Okay? Which occupies space and has mass is called matter. There are three states of matter. First, solid, second liquid, and third gas. Okay, there are three states of matter: solid, liquid, and gas. Now matter is classified in two parts: first pure substance and second mixture. Again, pure substance is classified in two parts: element and compound. Now what is element, what is compound? An element is a pure substance which is made up of only one kind of atom. मतलब सिर्फ एक तरीके के एटम से मिलकर के बनता है एलिमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा. नाउ कंपाउंड. A compound is a pure substance made up of two or more elements in a definite proportion. मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जब एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, प्रोपोर्शन वो फिक्स होगा. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. नाउ व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल? स्टूडेंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम होगा. नाउ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और अ कंपाउंड. मतलब ये कि किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जो एटम होता है वो किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है. ओके. नाउ अब हम बात करेंगे हमारे नेचर में. अब नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स. अब इन सबको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग माइंड में रख पाना इतना आसान नहीं है. फिर भी हम एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 30, 1 से 30 तक का, 1 से 30 तक का जितने भी एटम्स हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में, ठीक है, उनके सिंबल के साथ लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे. ओके. नाउ first element will be hydrogen. First of all, we will write atomic number. Okay, name of element, and symbols. Okay. Now first element is hydrogen. Okay, first element is hydrogen. Symbol will be H. Okay. Second, helium. And symbol will be helium of symbol of helium will be He. Okay. Third, hydrogen, helium, lithium. Okay. LiThium. Li. Okay. Hydrogen, helium, lithium. Next, beryllium.
symbol will be Be. Okay. Next, fifth, boron. Symbol will be B. Next, carbon. Symbol will be C. Next, nitrogen. Symbol will be N. Next, oxygen. Symbol will be O. Next, 9, fluorine. Symbol will be F. Next, neon. Symbol will be Na. Okay. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Symbol will be H. Symbol of hydrogen H. Helium He. Lithium Li. Beryllium Be. Boron B. Carbon C. Nitrogen N. Oxygen O. Fluorine F. And neon Na. Okay. Now, next, atomic number 11. Atomic number 11, sodium, and symbol will be Na, not S या SO. ये नहीं लिखेंगे. सोडियम क्या होगा, वो सिंबल क्या होगा, Na होगा. ओके. सोडियम, देन मैग्नीशियम, symbol will be Mg. Sodium, magnesium, aluminium, symbol will be Al. Aluminium, silicon, symbol will be Si. Phosphorus, symbol will be P. Then sulfur, symbol will be S. Then chlorine, symbol will be Cl. Then argon, symbol will be Ar. Now potassium, symbol will be K. Now next, calcium. Calcium C. So next, atomic number 11, sodium, 12, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, and atomic number 20, calcium. Symbol of sodium will be Na, magnesium Mg, aluminium Al, silicon Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, potassium K, and calcium C. Now we will discuss next 21, 22. Elements having atomic number 21 to 30. Now next, name of element having atomic number
21 will be scandium. Symbol will be Sc. Okay. Next, titanium. Symbol will be Ti. Okay. Next, vanadium. Okay. Symbol will be V. Next, element having atomic number 24, chromium. Symbol will be Cr. Next, manganese. Symbol will be Mn. Next, iron. Symbol will be Fe. Next, cobalt. Symbol will be Co. Next, nickel. Symbol will be Ni. Now, copper. Symbol will be Cu. And last, zinc. Zn. Element having atomic number 21, scandium. Symbol will be Sc. Scandium, titanium, Ti, vanadium, V, chromium, Cr, manganese, Mn, iron, Fe, cobalt, Co, nickel, Ni, copper, Cu, and element having atomic number 30, zinc, Zn. Okay, thank you.